wasting any time, let's study the Word of God. And if you listen this word carefully, it can bless you a lot. 우리가 이런 시간 낭비가 하는 것이 아니고 우리 지금 하나님의 말씀을 잘 듣고 여러분이 하나님 말씀을 경청을 하시면은 축복을 받을 겁니다. Amen. अय्यूब की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 21वीं आयत को देखेंगे. Job from the Old Testament, chapter 21, verse 22. 이 욥기 20장 21절에 의하면은 Let's open Job chapter 21. 전부 다 verse 성경 말씀 좀 열어보시죠. 22 बाब की किताब. Chapter 22, verse 21. 저기 22장 욥기 22장 21절. Okay, I am reading for you. I will read it for you. 제가 읽어드릴게요. उससे मिला रह तो तू सलामत रहेगा. Read it in Korean. 여러분 한국말로 읽어보세요. 시작. 너는 하나님과 화목하고 평안하라. 아멘. 복이 내게 임하리라. और इससे तेरा भला होगा. ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम जिस खुदा की इबादत करते हैं उसे जानना और समझना बहुत ज़रूरी है. Job chapter 22, verse 21. Job chapter 22, 21. 욥기 22장 21절. All right. Anybody has English Bible also? 영어 바이블로 돼 있는 분 읽어보시죠. Okay. So it is very important to know the God you are worshiping. 여러분이 예배를 드리는 하나님이 정말 중요하다는 걸 말씀하고 있습니다. अय्यूब एक बड़ी मुसीबत में एक बड़े मुश्किल दौर में से गुजरा, लेकिन फिर भी उसका ईमान इसी बात पर था कि खुदा को पकड़े रहने से, खुदा से मिले रहने से इसी में हम सलामत रहेंगे और इसी में हमारा भला है. Job went through a very difficult time in his life. But still, he hold on with this, that knowing God is the key of prosperity. 이 욥이 굉장히 힘든 시기를 보냈지만 욥이 하나님을 의지함으로써 이러한 축복을 받고 어려움을 극복할 수 있습니다. हम पहली बात ये देखेंगे कि जो लोग खुदा के नज़दीक रहते हैं या खुदा की कुर्बत में रहते हैं उन पर हमेशा खुदा की सलामती भी रहती है. ये पहला पॉइंट है. The first thing which I want to tell you is this: if we are in relationship with God, then the peace of God remains on us. 제가 여러분에게 먼저 말할 수 있는 것은 여러분이 하나님과 교제를 나누게 되면은 이 하나님의 은혜가 여러분께 충만할 겁니다. Amen. इमसाल की किताब में सुलेमान उसके तीसरे बाब की 17वीं और 18वीं आयत में कहता है. Proverbs chapter 3, verse 17 and 18 says. 이 잠언 chapter 23. Proverbs chapter 3, 잠언 3장 verses 17 and 18. 17절 18절 말씀입니다. There is written कि खुदा की राहें खुशगवार हैं. खुदा के जो रास्ते हैं वो बड़े खुशगवार हैं. वहाँ खुशहाली है और वहाँ खुशी का समा रहता है. All the ways of the Lord are very pleasant and beautiful. 이 모든 것이 정말 아름답고 정말 즐거운 일입니다. और जो उन रास्तों में रहते हैं उन पर हमेशा सलामती का साया रहता है. खुदा की बरकत उन पर रहती है. And all those who walk on those beautiful ways of God, the peace and prosperity always remains with them. 이 하나님을 위해서 일하는 여러분 모두는 정말 하나님의 그런 평화와 번영을 누리게 될 것입니다. और फिर उसका आगे कहता है कि वो लोग मुबारक हैं जो खुदा की राह पर चलते हैं और खुदा से जुड़े रहते हैं. And the Bible says the people who walk on the ways of God are the blessed people. 이 성경 말씀에 따르면은
여러분 하나님을 위해서 일하는 사람은 하나님의 일을 하게 되는 것이죠. खुदा की राह पर चलने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ इतवार के दिन इबादत करें और बाकी दिन हम खुदा से दूर रहें, अपनी दुनिया के कामों में, अपनी ऐशो इशरत में मगन रहें और फिर संडे को इबादत करके हम कहें कि हम खुदा की राह पर चल रहे हैं। Walking on the ways of God does not mean to worship only on Sunday. It means every day you are attached with God and avoid your sins. 하나님을 믿는다는 것은 단지 주일만 섬기는 게 아니고 항상 저 하나님을 섬겨야 되는 그런 일정입니다. हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं कि सलामती खुदा के लोगों के साथ रहेगी। We are learning from the Word of God that the peace will stay with the people of God. 이 성경 말씀에 따르면은 하나님의 그 말씀은 이 Peace of the Lord will stay with the people who walk with God. 하나님을 위해서 일을 하는 사람들에게 평강이 함께합니다. दाऊद नबी उसकी पिछली जिंदगी बड़ी मुश्किल की जिंदगी गुजरी, जंगलों में भेड़ बकरियों के पीछे, और एक बहुत मुश्किल जिंदगी उसने गुजारी। और जब खुदा ने उसे सरफराज किया, खुदा ने उसे बरकत दी, अपने लिए खुदा ने उसे चुन लिया, तो फिर वो क्या कहते हैं हम अभी देखेंगे। David, first he was a shepherd, and he was just a small shepherd moving here in the forest and jungles. But when God prospered him, everything changed. 다윗은 처음에 아주 조그만 목동이었는데 그가 점진적으로 활동을 하면서 하나님이 함께함으로써 엄청난 축복을 받고 앞길이 튀었습니다. और दाऊद ज़बूर नंबर 31 में उसकी 23वीं आयत में अपनी जिंदगी का एक तजर्बा बयान करता है। In the Psalms of David, he tells an experience of his life. 31st Psalm, 31st Psalm, 이 시편 23rd verse. 31장 22절에 따르면은 He tells the experience of his life. और वो कहता है, यस, 누굽니까 그 다윗의 생활에 대해서 쭉 설명을 했죠. और वो कहता है खुदावन से मोहब्बत रखो ऐ मुकद्दसो। Love the Lord, holy people. 이 우리는 하나님을 사랑을 하고 또 존귀한 사람이 되어야 됩니다. और फिर वो इसका रिजल्ट बताता है कि खुदा से मोहब्बत रखने का नतीजा क्या निकलता है। And in the second half of the verse, he tells that if you love God, there will be a result of it. वो कहता है खुदावन ईमानदारों को सलामत रखता है। 만약에 그 성경 말씀의 반 이상이 만약에 하나님을 사랑을 하시면은 여러분이 So the result is in the second half of the verse. 그 결과적으로 이 하나님을 결과가 남게 될 것입니다. वो कहता है खुदावन ईमानदारों को सलामत रखता है। God helps righteous to be at peace. 이 하나님은 여러분이 peace 평화를 이루고 하는데 정의감을 줍니다. ये तो वो ईमानदारों के लिए कहता है कि उनको सलामती में रखता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि जो ईमानदार नहीं है, जो मगरूर हैं, जो खुदा को सताने वाले लोग हैं, खुदावत उनको भी बदला देता है। If you love God, God will prosper you. But if you do not walk on the ways of God, you can never be prospered. 만약에 여러분이 하나님 방식대로 예배를 드리고 사랑하신다면은 여러분 하나님이 여러분을 축복을 하지만 하나님 방법대로 하지 않는다면 여러분 축복을 기대할 수 없어요. और फिर अगर हम इसका चौथा पॉइंट इस मैसेज का देखें, And the fourth point of this sermon is 이 설교의 네 번째 요점은 जो खुदावन से दिल से अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, खुदावंद उनको सलामत रखेगा। those who love God with their full heart
they will stay prosper and at peace. 이 하나님을 전심으로 사랑하는 자들은 하나님의 그런 축복을 받고 평강을 이룰 것입니다. अगर हम यूसाया का सहीफा उसका 26वां बाब उसकी तीसरी आयत को देखें Isaiah chapter 26, 이사야 26장에 따르면 verse 3. 이 3절입니다. Isaiah chapter 26, verse 3. वहां लिखा है जिसका दिल खुदावन में कायम है खुदा उसे सलामत रखेगा. If your heart is with God, then God will keep you safe and sound. 만약에 여러분이 하나님과 함께 하신다면 합력을 이루신다면은 하나님은 여러분께 평강을 주시고 번영을 주실 겁니다. इसका 5वां पॉइंट हम देखेंगे खुदावन अपने लोगों को खुद आकर सलामती बख्शता है. The fifth point is God Himself comes and give us prosperity. 이 5절의 다섯 번째 요점에 의하면은 하나님은 여러분을 축복하시기 위해서 왔습니다. यूसाया 26 बाब उसकी 12वीं आयत को अगर देखें Isaiah chapter 26, 이사야 26장 12 आयत verse 12. 12절입니다. वहां लिखा है खुदावन तू ही हमको सलामती बख्शेगा. Lord, it is you who will give us prosperity. 이 하나님이 바로 여러분께 축복을 내려주신 분입니다. क्योंकि तू ही हमारे सब कामों को हमारे लिए अंजाम देता है. Because it is God who makes all the works possible for us. 하나님은 모든 것을 다 이룩하시는 전지전능하신 분입니다. यूसाया नबी खुदा पर तवक्कल करते हुए कहता है कि जब हम खुदा की इबादत करते हैं उसे जलाल देते हैं उसके हुक्मों को मानते हैं और उसकी सारी उन बातों को अमली तौर पर अपनी जिंदगी में लाते हैं जो वो चाहता है तो फिर वो हमारे कामों में हर काम में खुद मुदाखलत करके हमारी मदद करता है. How does God makes our ways clear? Only if we obey Him, we walk with Him, we trust with Him, then God will come and He will make our ways clear. 하나님이 우리를 어떻게 정죄하고 깨끗하게 이끌어 나가냐면은 우리 하나님을 신뢰하고 하나님의 방법대로 따르면은 하나님께서 우리를 인도해 주시고 축복해 주실 겁니다. और हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कई दफा ऐसे हादसात हमारी जिंदगी में होते हैं हम मुश्किल में होते हैं हमारी कोई मदद करने वाला नहीं होता हम परेशान होते हैं लेकिन जैसे ही हम खुदा के सामने झुकते हैं वो हमारी मदद करने के लिए तैयार होता है. Many times in our life when we are in difficulties 많은 순간에 우리가 어려움에 봉착할 수 있습니다. and there is no one to help us. 우리를 도와줄 수 있는 사람 아무도 없어요. But at once when you bow down and go in the presence of God, the help comes from the heaven. 만약에 여러분이 하나님께 순종을 하고 그러면 하나님께서 여러분을 도와주실 겁니다. Amen. और यहाँ तक कि खुदा हमारे जो दुश्मन हैं उनको भी हमारे दोस्त बना देता है लेकिन उस वक्त जब हमारे काम हमारे तरीके जिंदगी गुजारने के तरीके खुदा को पसंद आते हैं तो वो हमारे दुश्मनों को भी हमारा दोस्त बना देता है. Even though the enemies who disturb you, the people who are against you, once when you love God with your full heart, God change your enemies and they become your friends as well. 여러분이 적이 있거나 여러분을 반대하는 누군가가 있더라도 여러분 하나님께서 그들을 바꿔서 여러분을 따를 수 있게 바꿔주는 분이 바로 하나님입니다. क्योंकि हम खुदा की कुदरत को उसके इख्तियार को जब जान जाते हैं तो फिर हमें अंदाजा होता है कि हमारे खुदा के सामने ना कोई चीज ठहर सकती है और ना कोई उसका मुकाबला कर सकता है वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है. If you know the power of God, if you know, then all the hurdles and problems in front of you will be very small because you know that the God has power to remove all these problems away from your way. 여러분이 하나님을 아신다면은 이 여러분이 봉사하고 있는 문제는 굉장히 아무것도 아닌 조그만 것입니다.
그래서 여러분이 하나님의 힘을 능력을 아셔야 됩니다. हमारी जिंदगी की मुश्किलात चाहे जितनी भी बड़ी हो, हमारा खुदा उससे ज्यादा बड़ा है. जो ठीक कर सकता है वो उससे ज्यादा बड़ा है. The problems, if they are big, don't worry. Your God is bigger than your problems. 문제가 크더라도 걱정하지 마세요. 하나님은 문제보다 크신 분입니다. लेकिन जरूरत सिर्फ ये है कि हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा दें. But the basic thing is this: you have to give the priority to the Word of God in your life. The first thing should be the Word of God in your life. 여러분이 제일 먼저 지켜야 될 부분이 바로 하나님 말씀을 따르는 겁니다. लेकिन हम क्या करते हैं, जहां हमारी खुशी होती है, जहां हमारे लिए एंजॉयमेंट होती है, वहां हम खुदा को पीछे छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं खुदा से माफी मांग लेंगे, चलो आज का दिन ऐसे करते हैं. लेकिन खुदा की तरतीब और तरीका हरगिज़ ये नहीं है. Sometimes when there are places we see, wow, this is good place to enjoy and have some fun. So we just ignore God and we think, if I do something wrong, no problem. Later I will come and I will ask forgiveness from God. But it does not work with God like this. 여러분이 어떤 멋있는 장소라든가 즐길 수 있는 그런 것을 보면 어우 참 멋있네 그러고 즐길 수 있어요. 그렇지만 여러분이 그 하나님을 잠깐 잊는다고 해서 어떤 문제가 생기지는 않습니다. खुदा की तालीम, खुदा का कलाम जो है ये हमारी राहों को दुरुस्त करता है और इसी के वसीले से हम खुदा के नजदीक पहुंचते हैं. The word of God makes your way clear so that you may grow in Christ. 하나님의 말씀 분명해요. 여러분이 주님 안에서 성장해야 된다는 겁니다. अगर हम इमसाल की किताब जो दाऊद के बेटे ने लिखी है, सुलेमान ने, अगर हम उसको पढ़ें, उसके तीसरे बाब की पहली और दूसरी आयत बहुत इंपॉर्टेंट आयतें हैं. Very important verses from the book of Proverbs, chapter 3. 이 제일 중요한 부분이 잠언 3장에 있는데요. Chapter 3, verse 1 and 2. 이 1절 2절 말씀입니다. वहां लिखा है, ऐ मेरे बेटे, My son, 사랑하는 내 아들아 मेरी तालीम को, मेरे कलाम को फरामोश ना कर. never ignore my word. 내 말을 전혀 무시하지 마라. 절대 무시하지 마라. बल्कि तेरा दिल But your heart should be, 여러분의 마음은 मेरे हुक्मों को माने. should obey my commandments. 나의 계명을 따르는 겁니다. 순종해야 됩니다. क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा. Because of the word of God, you will receive blessing and prosperity in your life. 하나님 말씀을 따르면 여러분은 축복을 받게 됩니다. Also the long life. 그리고 영원히 살 수 있어요. खुदा का कलाम हमेशा हमें खुदा के नजदीक लेकर जाता है. The word of God always takes us near to God. 하나님의 말씀은 여러분을 하나님의 가까이 이끌어갑니다. और दाऊद नबी एक बहुत खूबसूरत बात करता है. वो अपनी जिंदगी का निचोड़ इस बात में बयान करता है. The result of David's life is in this verse now. 이 귀절에 따르면은 마지막 부분에 उसने खुदा को पाने के लिए सारी चीजों से यहाँ तक कि अपनी जिंदगी को भी उसने जंग करने में दांव पर लगा दिया. जब उसकी जाति जूलियस से जंग हुई, To know God, to receive God in his life, David did every kind of effort. Even when he was in the war, he presented himself to fight with Goliath. 이 하나님을 만나고 하나님을 뵙게 되면은 여러분은 이 세계를 향해서 싸울 수 있는 힘을 줍니다. और अगर हम दाऊद का ज़बूर 73 पढ़े, उसकी 28वीं आयत में उसने अपनी जिंदगी का निचोड़ बयान किया है. Psalm 73 verse 28. 이 잠언 73장 23 73 Psalm 73 73장
and verse 28. 28절 This is 말씀입니다. the central idea or the central thing in the David's life. 이게 바로 다윗의 그런 곁에 지낸 일생이었습니다. दाऊद कहता है मेरे लिए यही भला है कि मैं खुदा की नजदीकी को हासिल करूं. David says that for me it is good to be nearer to God. 다윗은 내가 하나님께 점점 가까이 가게 돼서 기쁘다라고 얘기를 했습니다. वो ये कहता है कि मेरे लिए ये बड़ी अच्छी बात है, इसी में मेरी कामयाबी है, इसी में मेरी खुशी है, इसी में मेरी बहाली है कि मैं खुदा के नजदीक रहूं. He says that this is better for me to be closer to God, accept everything in this life. 다윗은 하나님한테 가까이 가는 것이 이 세상 어떤 것보다도 중요하다라고 말했습니다. और फिर वो कहता है कि मैंने खुदावन को अपनी पनाहगाह बना लिया है. इसीलिए दाऊद के बारे में कहते हैं कि उसने 66 जंगें लड़ी हैं और एक जंग भी नहीं हारा. Because David says in this verse that God is my shelter. And you know how many wars did David fought? 66 wars. And he never lose any war. 이 규절에 따르면은 다윗은 66번의 전투를 치르면서 한 번도 진 적이 없습니다. और कई जंगों में खुदा ने दाऊद को ये तजर्बा करवाया कि मैं तेरे साथ हूं, जंग तू नहीं लड़ेगा बल्कि मैं तेरे लिए जंग लड़ूंगा. In so many wars, God, he made David experience that I will fight for you, David, you wait. I will fight for you. And God fought for David. और ये तजर्बा हमारी जिंदगी में भी आ सकता है. 데이빗은 하나님이 다윗한테 말하기를 넌 기다려 내가 싸워줄게라고 계속 얘기를 하시고 아멘. 스스로 싸워주셨습니다. And the same experience you can do in your life as well. 그리고 똑같은 일이 여러분 일생에도 생활에도 나타날 수 있어요. लेकिन इसके लिए हमें अपनी जिंदगी का तरीकाकार बदलना पड़ेगा. But if you want to experience this, you have to change the way of your living first. 여러분이 이러한 것을 경험하기를 원한다면 생활을 바꿔야 돼요. दाऊद सुबह दोपहर शाम खुदा की हजूरी में झुकता, दुआ करता, उसकी प्रस्तिश करता, उसकी हमदो सना करता और फिर वो सारे कामों को पीछे छोड़कर पहले खुदा के हजूर में झुकता और फिर दूसरे जिंदगी के काम अंजाम देता. David used to ignore everything in his life. 다윗은 Morning, evening, afternoon, night. He always gave first place to God in his life. 다윗은 모든 것을 다 잊어버리고 하루 종일 아침부터 밤 늦게까지 항상 하나님을 찾았습니다. और यही सबब था कि जब दाऊद के पीछे साउल लगा हुआ था उसको मारने के लिए, साउल उसे पकड़ नहीं सका. And this was the reason because David was attached with God. He was hiding in God. Saul, King Saul, he could never chase him. 이 다윗은 항상 하나님 안에 있었고 이 그 왕의 아들이 사울이죠. 사울은 결코 그렇지 않았습니다. 다윗은 항상 하나님한테 숨어 있었어요. दाऊद के पास 500-600 लोग, साउल के पास हजारों लोग. उन्हीं पहाड़ों में दाऊद है, उन्हीं पहाड़ों में साउल है. दाऊद साउल के सामने भी आ जा रहा है लेकिन खुदा बीच में मुदाखलत कर रहा है. साउल दाऊद तक पहुंच ही नहीं सका. David had only few people with him. Saul, the king, had thousands of people. But still, Saul couldn't catch David. Why? Because God was there. 다윗을 따르는 사람은 몇 사람 없었어요. 사울은 수천 명의 군대를 갖고 있었습니다. 근데 사울은 다윗을 어떻게 할 수가 없었습니다. 왜? 하나님이 다윗과 함께했기 때문입니다. हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है. It can also happen with you. 이러한 일이 여러분에게도 일어날 수 있어요. अगर हम खुदा के साथ पूरे दिल के साथ, But there is a condition. You have to walk with God with your full heart. 조건이 있습니다. 여러분이 하나님을 진심으로 섬겨야 됩니다. तो सलामती हमेशा हमारे साथ रहेगी. Then only the peace and prosperity will stay with you. 그렇다면은 여러분의 평강과 번영이 따르게 될 것입니다. आपके दुश्मन आपको देखेंगे जरूर
आपसे शायद वो नफरत भी करे, आपको नुकसान पहुंचाने के मंसूबे भी बनाए, लेकिन अगर खुदावन जिंदा खुदा आसमान और जमीन का खुदा आपके साथ है तो आपको कोई कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। Your enemies will see you, they will watch you, they will try to destroy you, they will make plans against you. But if God is with you, they cannot do anything with you. 비록 적들이 여러분을 넘어뜨리고 공격을 하려고 할지라도 여러분은 하나님이 함께하기 때문에 결코 넘어지지 않습니다. तजर्बा करके देखें, आए इसको तजर्बे के तौर पर अपनी जिंदगी में ले लें। खुदा के साथ पूरे दिल से, पूरी जान, पूरी अकल, पूरी ताकत से मोहब्बत करके देखें, उसे पहला दर्जा देकर देखें और फिर वो देखिए वो आपको दुनिया में कैसे सरफराज I करता want to है। encourage you, experience this. Try it. Love the Lord with your full heart and then see how God is going to prosper you in this world. Amen. 여러분 그런 것을 경험해 보시기 바랍니다. 정말로 전심으로 하나님을 섬겨보세요. 어떤 일이 일어나는가 하나님께서 여러분 이끌어 주실 겁니다. इसराइल छोटा सा मुल्क है, लेकिन खुदा ने उसे ब्लेस किया है इसलिए कि वो खुदा के कलाम को पूरे तौर पर अपने बच्चों को सिखाते हैं, अमल में लाते हैं। आज हमारे बच्चे क्यों बिगड़े हुए हैं? क्योंकि हम उनको कलाम नहीं सिखाते। Israel is a small country, but why he's famous? Because God is with them. And why so many nations they cannot handle their children? Because they don't teach them the word of God. 이스라엘이 조그만 나라지만 왜 이렇게 막강한 영향력을 행사했냐면은 항상 하나님이 이스라엘과 함께했기 때문입니다. 많은 국가들이 하나님을 섬기는 그런 것을 가리키지 않고 있어요. और मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आप लोग मुबारक हैं कि अपने बच्चों को अपने साथ खुदा के घर में लेके And I आते हैं। want to tell you, you are blessed people that you are here with your children. 여러분은 축복받은 여러분입니다. 여러분 자녀들과 이곳에 함께 있어요. क्योंकि खुदा की सलामती, खुदा की बरकत, खुदा का रहम, खुदा का फजल उन पर ही रहता है जो अपने घराने के साथ उसकी इबादत करने आते हैं। Because the prosperity will stay on you if you worship the Lord with your family. 여러분이 여러분 가족과 함께 하나님을 섬기신다면은 여러분은 영원한 그 번영을 누리게 될 것입니다. हमारा आज का टॉपिक यही था कि खुदावन से मिला रह तो तू सलामत रहेगा और इससे तेरा भला होगा। So the topic today was this: if you will be attached with God, you will be prospered. Amen. 오늘 주제는 여러분이 하나님의 좀 더 교제를 나누고 가까워지신다면은 여러분 번영에 따른 축복을 받게 된다는 것이죠. खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपनी पाक पनाह में और अपनी हजूरी में रखे। May God bless you and keep you safe and prosper you. हालेलुया। 하나님의 축복이 되기를 기원합니다. Let's close our eyes and pray. 기도하겠습니다. 눈 감으세요.